Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे आमे डीजेनरेट फर्मी गैस ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी आमे या पूर्वरु आइडियल फर्मी गैस ता सहित the Fermi level and Fermi energy and the effect of temperature on the Fermi Dirac distribution ए विषय पढ़ी सारी सो डिजेनेरेसी आड़कू जीवा आगुरु आमे आउ थरे रिवाइंड करदेबा जे जदि गोटे आमे असेंबली नौचु ऑफ फर्मियंस जहाकू कि आमे फर्मी डिराक गैस कहूचु ताले नंबर ऑफ पार्टिकल्स को टोटल ताको आमे लिखि पारथुला n इक्वल टू समेशन NEDE एई समेशन को आमे इंटीग्रेशन रे रिप्लेस कर देउथला राइट आ तार वैल्यू को ए हिसाब रे आमे पाउथला ओके जो थरे कि अल्फा हे गला माइनस म्यू बाय केटी सिमिलरली टोटल इंटरनल एनर्जी को भी आमे एक्सप्रेस करि पाउथला इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ENED एंड रिप्लेसिंग इट्स वैल्यू तापरे आमे सब्स्टिट्यूट कर दोथला x इक्वल टू E बाय केटी सो दैट dx इक्वल टू माइनस सॉरी dx इक्वल टू DE बाय केटी होतला ओके एई रिप्लेसमेंट कर सारला परे हमर टोटल नंबर n रो वैल्यू ए हिसाब रे आस्तला जोथरे कि एई पार्ट अलोंग विथ द इंटीग्रेशन हमें 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाए याकू रिप्लेस करथला f1 अल्फा रे सिमिलरली हमर एनर्जी रो एक्सप्रेशन मध्ये ए हिसाब रे आस्तला जोथरे कि इंटीग्रेशन अलोंग विथ 4 बाय 3 रूट पाए याकू हमें रिप्लेस करथला with f2 alpha ओके एई रिप्लेसमेंट को आउथरा हमें देखिदेला एबे हमें जदि देखिबा फर्मी टेम्परेचर कोन ओके ऑलरेडी हमें जानि सरचु फर्मी एनर्जी कहले एट एब्सोल्यूट जीरो इट इज द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड ओके और लेवल सो फर्मी टेम्परेचर माने किछि नहीं TF इक्वल टू EF0 बाय K और म्यू F बाय K सो म्यू एफ रो वैल्यू आमे ऑलरेडी पाई सारथिला जोटा आमे रिप्लेस कर देला तार वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय के एटा आमे प्रीवियस टॉपिक रु नैचु ई वैल्यूटा देखिबो सो एतिके आस्तला यार वैल्यू एबे डिजेनरेसी आड़ को आमे मूव करिबा देखो जदि टेम्परेचर हमर फर्मी टेम्परेचर बहुत छोटो अछि T इज वेरी वेरी लेस देन TF और KT इज वेरी वेरी लेस देन EF0 or KTF then the distribution is called as strongly degenerate. Now when the temperature T is greater than TF or KT is greater than EF0 then the distribution is called slightly or weakly degenerate. किंतु यदि temperature very very greater than TF होची बा KT very very greater than EF0 then we get the classical limit and the distribution will be said to be non-degenerate. Classical limit माने एठी Maxwell Boltzmann distribution. Okay, so here the value of alpha is playing an important role. Okay, so the alpha value it is negative in case of your strongly degenerate system, while it is positive for non-degenerate and slightly degenerate systems. Okay, so एठी आमे देखुतला जदि फर्मी एनर्जी EF एटा पॉजिटिव रहउची एट लो टेम्परेचर आउ इट इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर ओके सो ए हिसाब रे अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव बा पॉजिटिव रहउची अच्छा एबे आमे डिजेनरेसी आड़ को मूव करिबा फर्स्ट देखिबा अबाउट वीक डिजेनरेसी तो एथि पई कंडीशन हला एट द टेम्परेचर T ग्रेटर देन TF ओके that is an intermediate temperature
Okay, so Fermi gas is said to be slightly degenerate or weakly degenerate in this case. So here KT is greater than EF0, then EF will be negative or alpha will be positive. A ର value less than 1 ହେବ. Okay, ଆମେ ଜାଣିଛୁ A ହେଉଛି replacement ଆମେ ନେଇଥିଲା which is nothing but e to the power minus alpha. Okay, ତାହେଲେ ଆମେ a less than 1 ଯଦି ଲେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର exponential factorଟା ଥିଲା 1 by a into e to the power x plus 1. Okay, याको ଏବେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା 1 by a e to the power x plus 1 to the power minus 1. Okay, or we can take common a e to the power minus x ताले एठी ए हिसाब रे आसीगला 1 plus a e to the power minus x whole to the power minus 1. So एबे हमें याकू binomial theorem apply करि परिबा because a second term a is very less than 1. Okay, so binomial theorem apply करिकी याकू ए हिसाब रे गोटे सीरीज हिसाब रे हमें लिखि देला तापरे एबे f1 alpha जो हमें रिप्लेसमेंट नैथिला सेही टर्म को जिबा. Okay, this was the replacement. ताले एबे ए जो डिनोमिनेटर तार भैल्यूटा आम ये पाई सारी ताकू एबे रिप्लेस करवा जदि ताले 1 by 1 सबू टर्म को आम अलग अलग लिखा पड़ो. राइट. ओके, आ 2 by स्क्वायर रूट ऑफ पाए बाहर रहा ताले एबे याकू जदि आम सॉल्व करूचु इट इज गिविंग अस a minus a square by 2 to the power 3 by 2 plus a cube by 3 to the power 3 by 2 minus dot dot dot. Similarly आम बाहर करि परिबा f2 alpha रो वैल्यू it will be a minus a square by 2 to the power 5 by 2 plus a cube by 3 to the power 5 by 2 minus dot dot dot. Okay, so higher order terms भी एठी रहउची. Now using these values of f1 alpha and f2 alpha we can now calculate the value of the total number and the total energy of the fermions. Okay, so एठी हमें value put कर देला दुईटा. एबे कोन करिबा हमें डिवाइड करिबा. ओके, e by n करिबा. ओके, ताले डिवाइड करले याकू एबे हमें जदि सॉल्व करूछु देन फाइनली e रो वैल्यू. ओके, e रो वैल्यू 3 by 2 kt then 1 plus a by 2 to the power 5 by 2 minus a square by 3 to the power 5 by 2 dot 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 empty so on आसीबो. राइट. ताले एठी आई थिंक टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि. दिस शुड बी 3 by 2 n kt हबो. ओके, ए n टा एपट को जिवो. राइट. सो जाबियो आई विल एडिट इट. So to the first approximation we can write n equal to gs v by h cube 2 pi mkt 3 to the power 2 pi mkt to the power 3 by 2 into a and the energy E equal to 3 by 2 gs v by h cube 2 pi mkt to the power 3 by 2 then kta first approximation माने एठी हमें केवल ए ब्रैकेट रे थिबा फर्स्ट टर्म a को नौचु. राइट. अच्छा, ताले एबे e by n जदि करिबा ताले 3 by 2 kt और e equal to 3 by 2 n kt हेबो. एज आई सेड एठी 8 टर्म स्मॉल n टा मिसिंग अछि. So this is the well known relation or the well known result of your perfect guess in case of your classical statistics. So e equal to 3 by 2 n kt हमें पाइगला. ताले एबे कंपेयर जदि करिबा एई जो दुईटा इक्वेशन 25 आउ 26 को. ओके, ताले it shows that for the ideal Fermi gas actually it deviates from that of your perfect gas behavior, and this deviation as we know is called as nothing but your degeneracy. Perfect gas ru Fermi Dirac gas केमती deviate hela ताहा ही होउची degeneracy, and it is obvious that this degeneracy is a function of a, that is e to the power minus alpha or e to the power mu by kt. So the greater will be the value of a, more marked will be the degeneracy. Hence, for a less than 1 or t greater than tf, the Fermi gas is slightly degenerate. Okay, because a ର value ଏଠି ଛୋଟ ରହୁଛି ତେଣୁ degeneracy ବି କମ ହିଁ ରହିବ. Okay, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ second case which is the strong degeneracy. So here when the value of alpha is large and negative, okay, बड़ भी हेबो यार वैल्यूटा नेगेटिव भी हेबो, then a equal to e to the power minus alpha is very
very greater than 1. Okay, now as the degeneration increases will increase with the increase of A. Therefore, in this case, the degeneracy becomes more prominent. Okay, and further to the first approximation from the above equation 23, A को हमें लिखी परिवा 1 by gs n by v h cube by 2 pi mkt to the power 3 by 2. And this equation shows that the gas will be strongly degenerate at low temperature and high particle density, that is n by v. Okay, तो low temperature रे strong degenerate ଆଉ high particle density रे ମଧ୍ୟ strong degenerate ହେବ କାହିଁକି because n by v ବଢ଼ିଲେ a ବଢ଼ିବ ଆଉ ଏଠି t ଯେହେତୁ ତଳେ ଅଛି t କମିଲେ ମଧ୍ୟ a ବଢ଼ିବ. So the evaluation of the integral f1 alpha and f2 alpha under these conditions is complicated. ଏବେ complicated ହେଇଯିବ. So we shall discuss this case of strong degeneracy at two temperature ranges. दुईटा temperature range रे strong degeneracy case को हमें discuss करिबा. First हला at absolute zero, that is t equal to 0. ଆଉ second हला when the temperature is above absolute zero but a is very greater than 1. So first ଏବେ sub case को आसीबा at absolute zero, that is t equal to 0. ताले a रो वैल्यू एबे केते हबो देखो a रो वैल्यू ए इक्वेशन 27 रो हमें जानु छु t जदी हमर 0 हे गला a will approach towards infinity, and in this case the Fermi Dirac gas is completely degenerate. Okay, because infinity होची सबुठु हाईएस्ट वैल्यू. Okay, हमें जानि छु जे degeneracy बढ़िबो केमती a बढ़िले. So at t equal to 0 we have already seen that the value of the Fermi Dirac distribution function Fe, it is equal to 1 when the energy is lying between 0 and Ef. However, it is equal to 0 when the energy is greater than Ef. Okay, so that NEDE similarly যদি আমি বাহার করিবা তাহলে it is equal to gs 4 pi mv by h cube 2m to the power half e to the power half de when the energy is again lying between 0 and ef0. এটি 0 রহিব. ওকে, প্রিন্টিং মিস্টেক again ଅଛି ଆଉ यार value এই নম্বরটা 0 ରହୁଛି when the energy is greater than ef. ମାନେ indirectly ये କହୁଛି ଯେ जो बैंड हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड अछि ता ऊपर आ किछि भी पार्टिकल रहू नाही. ओके, सो here EF0 is given by the equation 18 जोटा हमें previous topic रे already पढ़ी सारिछु. Now the total internal energy of the perfect Fermi gas at t equal to 0, that is the 0 point energy of the Fermi gas, याकू एबे हमें बाहर करिबा. It is nothing but E0 equal to 0 to EF0 ENEDE. एबे वैल्यू यार पुट करिबा. ओके, याकू एबे सॉल्व करिबा. ताले देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करिकि आमे जदि आके बढ़ुछु ताले 2 by 5 gs 4 by mv by h cube 2m to the power half EF0 to the power 5 by 2 आसीबो. ओके, आउ EF0 रो वैल्यू जदि आमे पुट कर देला ताले फाइनली यार वैल्यू आसीगला 3 by 5 NEF0. ओके, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे भी 3 by 5 NEF0 आमे बाहर करथिला, राइट. सो नाउ द प्रेशर at t equal to 0 याकू कहबा हमें 0 पॉइंट प्रेशर याकू लिखि परिबा P0 equal to 2 by 3 E0 by V. ओके, ए हिसाब रे हमें लिखिला काहे कि बिकॉज प्रेशर को हमें लिखि पारुछु माइनस del E by del T at temperature constant and entropy constant. Okay, so it is equal to 2 by 3 E by V, right. ताले एबे जदि हमें E रो वैल्यू पुट कर देला this will give you the expression for the pressure. Okay, so equation 28 and 29 याकू जदि देखिबा it is obvious that a strongly degenerate Fermi Dirac gas possesses energy and exerts a pressure even at 0 Kelvin. it is 0 Kelvin हेले भी देखो pressure और term रे किछि भी temperature term नहीं तेणु pressure रहुछि 0 Kelvin रे भी. Okay, and it is quite unlike to that of your Bose-Einstein or classical gases where the energy and pressure at absolute 0 are 0. energy रो expression रे भी देखो temperature नहीं तेणु temperature 0 हेले भी energy बा pressure 0 हेउ नहीं. Okay, याको हमें theoretically एबे देखिला. Now moving on to the next sub case.
at temperature above absolute zero. Okay, so here ame neba a is very greater than 1, but here T is also very less than TF. Okay, so temperature absolute zero nahi, borong ethi non-zero ଅଛି. Okay, ତାହେଲେ in this case the Fermi gas is strongly degenerate at low temperature. Okay, and E is still positive. ତାହେଲେ equation 17 जोटा previous class रे देखिथिला number of particles in the energy range E and E plus DE ताको आमे लेखि परतुला ई हिसाब रे. ओके, एक्सप्रेशन यार एमती आस्तुला. सो याकू एबे लेखि परिबा आमे केमती ना 3/2 n by EF0 to the power 3/2 then e to the power half our exponential ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେଲା. ଓକେ, therefore the total number of particles याकू एबे आमे लेखि परिबा total number किछि नै सेई इंटीग्रेशन ही करिबा आमे n equal to integration 0 to infinity n e de. ओके, इंटीग्रेशन रे पुट कर देला. सिमिलरली टोटल इंटरनल एटा इंटीग्रल होनी एटा इंटरनल एनर्जी e equal to this much, right? Now to solve the integrals, that is equation 31 and 32, let us consider the general integral of the type I equal to 0 to infinity phi e de, because एठी देखो गोटे रे अछि तमरो जदी चेक करिवो e to the power 3/2 एठी भी e to the power 3/2. I think एठी भी मते टिके प्रिंटिंग मिस्टेक लागो छी. This should be I think e to the power 1/2. Okay, so जा भी हो, it is a function of energy. So phi e de, let us take phi as a function, simple function of e, and तळे रहउची e to the power e minus ef by kt plus 1. Okay, so as I said, phi e is a simple function of the energy E such that phi E equal to 0 when energy E equal to 0. Then the integral of equation 33 can be expanded using the Taylor series expansion. Okay, Taylor series expansion re ame ei hisab re ame expansion ku yaku lekhi dela. Okay, up to the highest order terms. Now phi dash phi triple dash etc, they denote the first and the third etc of differential of this function phi. Okay, now for phi equal to, as I said, the printing mistake thila. Okay, e to the power half habo. Okay, so phi jodi equal to e to the power half hochi ताले आमे याकू बाहर करि परिबा 0 to ef phi e de equal to 2/3 ef to the power 3/2. Now phi dash equal del phi by del e at e equal to ef, so it is equal to half ef to the power minus half. Similarly phi double dash e equal to finally asibo 3/8 ef to the power minus 5/2. एटा phi triple dash e रो value, phi double dash रो एतिकी होची value 1 minus 1/4 ef to the power minus 3/2. Right, so एबे हमें पुट करिबा एई value गुडा ताले n the number याकू आमे जदी बाहर करूछु देखो एटी हमरो टेलर सीरीज एक्सपेंशन को हमें पुट कर देला. ओके, देन आकू जदी बढ़िबा ताले एठी एबे चेक करो हमरो value एई एक्सपेंशन को पुट कर देला परे आसुची कोन ना एठी ef by ef0 एई रेशियो को हमको बाहर करबा को पड़िबो. ओके, सो ef by ef0 केमती आसिला देखो एठी ef to the power 3/2 अछि, एठी ef0 to the power 3/2 अछि. ओके, सो आमे कोन करिजु ef to the power 3/2 को बाहर को नै आसचु. राइट, ताले देखो एई टर्मटा एठी आसची. राइट, आउ एठी small n कटि जाउची so that LHS टा 1 हे जाउची. राइट, ओके, आउ 3/2 एठी 2/3 सहित मल्टीप्लाई हे कि भी कटि जाउची, सो एठी बंते 1 आसी गला. राइट, सो हिसाब रे हमरो सिंप्लिफिकेशन होउची आ ए रेशियो ef by ef0 करी कि ए जो 3/2 टा कॉमन पावर अछि एटा को आरो सेट को नै जिबा हमें. राइट, तो हे गला हमरो एबे वैल्यू टा केते ना -2/3. Right, so remembering that kt is very less than ef, we can take into account only the first two terms. प्रथम दुईटा टर्म को ही हमें कंसीडरेशन को नबा इन द ब्रैकेट ऑफ द एक्सपेंशन और बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को हमें नेग्लेक्ट कर देबा. ताले फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर हमें नेला, देन इट इज इक्वल टू नियरली 1 minus 1/12
pi kT by EF whole to the power 2 or square. Okay, so EF square is equal to EF0 square 1 minus 1 by 12 pi kT whole square by EF रो whole square. Okay, so एतिकी आसिला हमरो EF square रो value, right? अच्छा, और 1 by EF square को आमे मध्य ए हिसाब रे लिखि परिबा like this. Now we can make the approximation by putting EF equal to EF0, okay, in the second term of the above expression, so that 1 by EF square is nearly equal to 1 by EF0 square. ताले एठी देखो second term रे EF जगह रे EF0 put कर देला. Okay, crude approximation पाइबा पई. So now using the equation 39 and equation 37 उपरे जो आमे पाइथिला ताको एबे जदी पुट करिबा ताले फाइनली सॉल्व करिबा को जिबा जदी EFT रो वैल्यू एतिकी आसिला. एटा आसुची एतिकी जाय आमे जो सॉल्व टा कला phi e को e टू द पावर हाफ नेकी. ना phi e को e टू द पावर 3/2 जदी नउचु ताले एबे देखो हमर इंटीग्रेशन ए हिसाब रे आसीबो 2/5 EF टू द पावर 5/2. सिमिलरली phi dash phi double dash phi triple dash आमे कैलकुलेट करला, सो दैट आमे बाहर करिबा एबे कोन ना टोटल एनर्जी रे ही हमरो e टू द पावर 3/2 थिला इंटीग्रेशन रो न्यूमरेटर रे ताकू आमे देखो ए जगह रे लिखि देला. ओके, देन टेलर सीरीज एक्सपांशन. ओके, सेम वे रे आमे आकू प्रोसीड करला जेंते आमे करथला. ओके, ताले एठी तुम जदी चेक करिवो ताले देखो 3/5 NEF0 एटा बाहर को आसीगला. ओके, आउ आमे पाउचु 1 plus 5/12 pi kT by EF0 रो whole square, and the corresponding pressure is nothing but P equal to 2/3 into E by V, which is nearly equal to how much? That is हमरो 3 आउ 3 देखो तळे ऊपर कटि जिवो, so that 2/5 NEF0 by V into 1 plus 5/12 pi kT by EF0 whole square. Okay, so এই equation 42 or 43 represent করছি the approximate energy and pressure of a strongly degenerate gas. Okay, so this is all about the degenerate Fermi gas. Thank you.